Hello everyone, welcome to this channel. So today I am going to give a presentation on the chemical and industrial disaster. So look, this is the brief outline of my presentation. I will discuss the following topic in the upcoming slides. So first I will tell you what is chemical and industrial disaster, then its cause, then impacts, then I will tell you timeline of some major chemical and industrial disaster which happened in the past. Then I will explain the Bhopal gas tragedy of 1984. Then I will discuss the Visakhapatnam gas leak incident which happened in May 2020. Then its prevention and response. Prevention during the industrial and chemical disaster and during the normal time. Then I will show you an animated video on chemical and industrial disaster through which you can understand at the time of the chemical and industrial disaster what you can do. Now, finally, I will conclude my presentation. So look, व्हाट इज केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। सो जो केमिकल डिजास्टर है ये एक अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस है जो कि ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को दोनों को जो है हार्म करती है। ठीक है, केमिकल और इंडस्ट्रियल डिजास्टर में वेरियस इंसिडेंट लाइक फायर्स, एक्सप्लोजन्स, लीकेजेस और रिलीज ऑफ द टॉक्सिक या हैजार्डस मटेरियल इंक्लूड होते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को इंजर करते हैं, उन्हें डिसेबल कर देते हैं एंड इट इज आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ द इलनेस। सो लुक, disaster caused by industrial companies either by accident or any type of chemical explosions leads to the industrial disaster. So what are the different causes of the chemical and industrial disaster? So this is categorized into four types. First is the human error, and human error में क्या होता है कि इसमें humans are not able to fill the data properly to function a machine. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी मशीन है तो उसमें पहले ह्यूमंस को कोई भी जो स्टाफ होते हैं वो डेटा एंटर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है मशीन फंक्शन करती है। सपोज किसी भी केमिकल का उन्होंने जो है रीडिंग पॉइंट बढ़ा दिया तो उसकी जो है रिलीज केमिकल की वो ज्यादा हो सकती है, तो ये जो है केमिकल और इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस इज द ह्यूमन एरर। सेकेंड इज द इम्प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द workforce. So if workforces are not properly trained, if the workers are not properly trained to maintain the machines, then it can also cause a major industrial disaster. थर्ड होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। सपोज कि कोई भी इंडस्ट्री जब स्टैब्लिश होती है तो उसमें जो है कई तरह के इक्विपमेंट एंड मशीन्स का यूज किया जाता है, तो कुछ डिफेक्ट्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे ही होते हैं और उससे जो होता है हमारा इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो सकता है। फोर्थ इज द इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। इन वेरियस इंडस्ट्रीज देयर इज अ लैक ऑफ द मेंटेनेंस, इंक्लूडिंग अगर आप रेलवे को भी ले लो तो रेलवे में भी मेंटेनेंस की वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री में भी मेंटेनेंस का जो है पुअर होना, मेंटेनेंस जो है इसका लेवल खराब होना इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ठीक है, तो इन चार कैटेगरी को आप जो है एक्सपांड कर सकते हो, लिख सकते हो इसके बारे में फोर लाइन। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। सो देखो इम्पैक्ट क्या होता है कि आई और स्किन में इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है एंड इट कैन ऑल्सो अकर विद अ फ्यू मिनट्स और आवर्स ऑफ द एक्सपोजर। यानी अगर आप केमिकल और किसी भी केमिकल्स के कांटेक्ट में आए तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कुछ मिनट्स में या कुछ घंटे में ही होने लगते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा केमिकल डिजास्टर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके ह्यूमंस हो गए, लाइव स्टॉक हो गए, प्लांट्स हो गए, तो इनको क्या होता है, इनकी डेथ हो सकती है, इंजरी हो सकती है और इनको डिजीज हो सकता है और लाइफ लॉन्ग जो है डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, आप इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं तो लो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जब कोई भी केमिकल रिलीज होता है इंडस्ट्री से तो वो किसी भी जो है रिवर में जाता है और रिवर को क्या करता है, पॉल्यूट कर देता है, या कोई भी गैस निकलती है तो वो इन्वायरमेंट में जो है फैलती है और उससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है और अल्टीमेटली ह्यूमंस जो है और लाइव स्टॉक जो है और प्लांट्स उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं और जिससे उनको क्या होता है, हार्म होता है। ठीक है, Now there are some major chemical or industrial disaster which happened in the past. So पहला देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी, वेरी फेमस, ये 1984 में हुआ था। सेकेंड इज द गेल पाइपलाइन ब्लास्ट जो कि 2014 में हुआ। सेम भिलाई स्टील प्लांट 2014, तुगलकाबाद गैस लीक 2017, कानपुर में अमोनिया गैस लीक हुआ था वो भी 2017 में हुआ था। एंड देन
chlorine gas leak is also happened on May 16, 2017, and Bhilai steel plant blast हुआ था 2018 में. So look, there is a many chemical and industrial disaster. So here you can read where did it happen, what caused the disaster, and number of the deaths. ठीक है, तो आप इसको जो है रीड कर सकते हो. नाउ भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो भोपाल गैस ट्रेजेडी देखो, 2 and 3 दिसंबर 1984 की नाइट को जो है एक गैस लीक हुआ जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड था. ये प्लांट जो है भोपाल में है, प्लांट का नेम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो उस गैस की वजह से जो है केमिकल और इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ. अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, मेनी पीपल इन द भोपाल जो है डाइड फ्रॉम द सफोकेशन. ठीक है, suffocation was one of the major cause of the death, and the gas was very heavy and thick, and it filled their lungs, essentially drowning them. And however, methyl isocyanate also react strongly with organic tissue. तो जब ऑर्गेनिक टिश्यू से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो इनकी रिएक्शंस की जो कैपेसिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली इट कॉजेज डेथ, एंड इट आल्सो कॉजेज अ केमिकल बर्न्स टू आईज एंड स्किन. नाउ अनफॉर्चुनेटली इम्पैक्ट जो है वो उसी रात के लिए लिमिटेड नहीं था. रिसर्चर एस्टिमेट दैट कि 5 lakh to 6 lakh पीपल वर इम्पैक्टेड बाय द केमिकल गैस, एंड मोस्ट ऑफ होम सफर्ड लॉन्ग टर्म इलनेस. ठीक है, जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, एंड उनकी जीन भी इफेक्ट हो जाती है, जिससे जो अपकमिंग जो जनरेशन होती है ना, अपकमिंग जनरेशन भी उससे इफेक्ट होती है. सो इट वाज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. नाउ फ्यू स्टडी हैव बीन डन ऑन द इफेक्ट ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, but researchers suggest that this chemical can lead to numerous chronic disease as well as higher rate of spontaneous abortions and birth defects. Okay, so these are the major causes. Now if you want to know more about the Bhopal gas tragedy 1984, there is a movie, name is Bhopal a prayer for rain. You can watch this and you will know more about this. Now second is the Visakhapatnam gas leak incident. So it happened on the May 7, 2020 around 3 a.m. in the morning. A toxic gas believed to be styrene leaked from a chemical plant owned by a LG Polymer Limited at Visakhapatnam area, which killed the 11 people and injured several others. Now what was its effects? So the fume spread over a radius of the 3 kilometer. 5 villages were affected by this, and hundreds of people were rushed to the hospital following widespread breathing difficulties and sensation of the burning eyes. Okay? Many had been found lying on the ground unconscious as a result of the gas exposure, and the initial estimate noted that at least 11 people were dead, and 20 to 25 people in the critical conditions, and by next day the death toll had risen to 13, and more than 1,000 people were reportedly exposed to the gas. Now look, prevention. So what should be precaution to be taken during and after the chemical industrial accident? So देखो, first of all, do not panic, evacuate calmly and quickly perpendicular to the wind directions through the designated escape route. Okay, second is the keep a wet handkerchief or piece of cloth on the face during evacuation, ताकि आपको उस गैस का इफेक्ट जो है थोड़ा कम हो सके. थर्ड इज द कीप द सिक, elderly, weak, handicapped and other people who are unable to evacuate inside the house, and close all the doors and wind tightly so that the gas should not affect them. Gas could not affect them. Now next is the do not consume the uncovered food, water, etc. open to the air. Drink only from the bottle. ठीक है, and change into the fresh clothing after reaching safe places or shelter, and wash hand properly. Now sixth is the inform fire emergency services, inform the police officials and medical services from the safe location by calling the appropriate number. Now listen to the public addressing system to plant or the plant or factory, or local radio or TV channels for advice from the district administration. Number 8 is the provide correct and accurate information to the government officials so that government official can take action accordingly. Next is the inform others on occurrence of the event at the public gathering places like school, shopping centers, theater, etc. so that they can evacuate early. And don't pay attention to the rumors and don't spread rumors. Now next is the some precaution during the normal time. So in normal time what you can do? Look, do not smoke or lit fire or spark in the identified hazard area.
ठीक है। सो इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप इंडस्ट्री की जगह पे हो, मशीन्स के पास हो, तो वहां पे कभी भी आप स्मोक मत करो। सेकंड जो है, कीप द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द नियरेस्ट हैजार्डस इंडस्ट्री, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम, हेल्थ सर्विसेज एंड डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी यूज। Third is the avoid near the industries. Avoid housing near the industries and producing or processing the hazardous chemicals if possible. Next is the take part in preparing disaster management plan for the community and identify safe shelter along with safe and easy access road. And next is the prepare a family disaster management plan and explain it to all the members of the family so that at the time of the disaster everyone can take actions according to the situations and can save to other peoples also. Now make the family or neighbors aware of the basic characteristics of various poisonous hazardous chemicals and the first aid required to treat them. Adequate number of personal protective equipment needs to be made available to deal with the emergency situations. Now look, this is the small video where you can see what you can do at the time of the chemical and industrial disaster, and through this video you will understand easily. So this video is self-explanatory, so nothing, no need to explain. So look, conclusion. So disaster is a reality in the chemical industry, but its negligence or misfortune can so easily result in devastating consequences. And the result of the chemical disaster has effects through generations of the populations. For example, Bhopal gas tragedy 1984, which are almost irreparable, and the cost of that to the affected people is unimaginable. So we should not take this disaster lightly, and we should adopt some precautions when work, if someone is working in the industrial sector or any chemical industry. So thank you so much. Thanks for watching this video.